Namaskar, very warm welcome to all our viewers and learners in this live phone-in session of CIT NCERT named Sahyog, where we talk about mental well-being of students and we try to provide them psychosocial support as well. I am Renu Bhatt with you all. You are watching us live on eVidya channels from channel number 6 to 12, and apart from all those channels, you are with us on our YouTube channel as well, that is ncertofficial Official. Dear learners, the topic that we are going to discuss today in this specific session is overcoming setbacks through self-reliance. So what exactly self-reliance is? This will be taught us by our experts. Let's meet our expert. You are Miss Deepmala. You are a faculty from Department of Educational Psychology and Foundations of Education, NCERT, New Delhi. Very warm welcome, ma'am. Namaskar. And we have our another expert as well. Let's meet him. You are practicing counselor, Mr. Bhavani Singh. Very warm welcome, sir. Namaskar. And dear learners and viewers, if you have any query and if you want to know something more about self-reliance, and if you want to share your experience either, feel free to connect to us through our various medium. You can call us on our telephone number, that is 8800 440 559. Either you can drop your queries at our email address, that is sahyog.ncert@cit.nic.in. And if you have joined us through our live streaming, that means you are on our NCERT official YouTube channel. Then you have to go to the live chat box, then you can drop your comment out there. And before I begin this particular session, let me share a very important piece of information with you all regarding India's G20 presidency. We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20's Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly get back to the session and let's move towards our expert Deepmala ma'am. We are very eager to know about self-reliance. Ma'am, what exactly self-reliance is? Yeah. Renu, that is very important topic again, because if you understand it from the word itself, reliance on oneself, right? अपने ऊपर ही निर्भर होना rather than somebody else. So ये सब होता क्या है? इसको हम समझने की कोशिश में कर रहे हैं कि actually what does it mean? Sometimes we seek help also, sometimes we look at the resources also. So does a self-reliance person does it or not do it? Whatever. What is actually self-reliance is? So if I'll use the layman term जो हमारे बच्चों के लिए बहुत important होगी कि they all have their best friend, right? And with whom they share everything, who sometimes console them like, oh my God, I have not did very good into my grades. तो वो best buddy क्या कहता है? It's okay, हो गया, अगली बार मेहनत कर लेना, ठीक है ना? And or something like this, oh my God, I'm really fearful, my mother will not like it that I'll go out with you. Then this buddy will again tell you the solution. This best buddy you have, when you make yourself this best buddy, this is called self-reliance, right? So हम इस चर्चा में हम यही कोशिश करेंगे किस तरह से हम अपने बेस्ट बडी बन पाए. मैं कम शब्दों में बोलूंगी. Of course it has many other different elements into it. For example, you really have to be confident about yourself. This is also some parameter of self-reliance I know someone, the person is really good, highly confident even then, but whenever the person does something or seek a decision or solution, the person looks at the others. Am I doing right? If the person has the solution, it's not the person does not have the solution, but the person always seek the validation of the others, right? Because somewhere this person has not given herself or himself the approval. जो तुम करते हो वो ठीक है, तुम कर सकते हो. It is not कि मैंने ग्लास तोड़ दिया तो मैं जो कर रही हूँ वो ठीक हूँ, नहीं. But I can mend this mistake too. That kind of the confidence into oneself. This is self-reliance. That kind of the acceptance and embracing about someone. It is not like I am always right. It is not at all like this. But a self-reliant person is like, oh, गलती हो गई, चलो अब कुछ सीख करते हैं. But a person who is not self-reliant or not accepting oneself will be like, oh my God, गलती हो गई, मम्मा अब मैं क्या करूँ, टीचर अब मैं क्या, मतलब always seeking that approval from someone else.
So self-reliant person is of course the best buddy who is highly confident of yourself. That is what self-reliance means. And when ma'am very beautifully explained by you what self-reliance exactly is. And sir, here we would like to know more about self-reliance from you and about setbacks in life of school-going children, sir. Yeah, very nicely ma'am has defined the term self-reliance, and as a language teacher and as a practicing counselor, I would like to first of all use bibliotherapy, and I would like to explain this term in a very simple manner by using an anecdote. Actually, it is a story with the same name, self-reliance, prescribed for Karnataka board in 6th class. So it is a 4-line story and very simple that once there was a boy, he was very dejected because of certain setback in his life, and he was sitting under a tree, and in order to distract himself from his bad mood, he was concentrating on a boy who was riding a bicycle. Suddenly he heard a scream, and he found that the boy who was riding the bicycle was in a ditch. He approached the boy, offered him a helping hand, but surprisingly he heard that the boy who was in the ditch, or we can say that who had just received a setback in his life, he simply refused to accept that help, and he said that I can help myself. So to the students, I simply wanted to tell you that this sentence, I can help myself, is in itself an indicator that the boy was self-reliant. Another thing, with a saying I would like to explain it, that there is a very popular and very common saying that God help those who help themselves. So ultimately, if we are able to help ourselves without the help of some other person from some outer or external source, then it means that we are leading towards becoming self-reliant. ये कोई एक छोटी टर्म नहीं है, अल्टीमेटली हमारे एक मानव जीवन का जो गोल है वो सेल्फ रिलायंट होना ही है, और ये केवल एक मानव के लिए नहीं है, सोसाइटी को भी सेल्फ रिलायंट होना है और देश को भी सेल्फ रिलायंट होना है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, वो भी पूरा का पूरा कहीं ना कहीं गांधी जी का जो सेल्फ रिलायंट रूरल विलेज के जो कंसेप्ट है उसी से उठाया हुआ है। नाउ मैम, एबिलिटी टू डू द थिंग्स ओन or make decisions, or we can say without seeking anybody else's help, is actually self-reliance. But the main thing is that what are the major setbacks in the life of a child right now? We all know that the new academic session has just started, and for past 2 or 3 days I was just going through this Sahyog sessions, and people were talking about that earlier we were having online session because of pandemic, then we had offline session, then we had in a mixed mode, synchronized and asynchronized, like that. But now it is totally in offline mode, and students are certainly facing many setbacks in their life because of the learning gaps. I would like to mention it again from the point of view of NCERT. As a practicing counselor and as a language teacher, I would like to give reference of class 9th NCERT book 8th chapter, and the chapter is with the name A House is Not a Home. And this is a story about a teenager who had certain setbacks in his life and how he overcame by becoming self-reliant. So the first setback right now in the life of a child, a school-going child, is that he has maybe left his old school and has joined new one. So if he has joined a new school, automatically he had to now meet new friends, he had to meet new teachers, new syllabus. So ultimately there is a newness anxiety in his way of his progress. So setback is actually a particular event in your life that impedes your progress. You will progress certainly, but the progress will be very slow. So earlier, आप देखिए एक सेट स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा था और उसकी प्रोग्रेस सही चल रही थी, और एकदम से एक वो नई स्कूल के अंदर आ गया, सब कुछ उसके लिए नया हो गया, तो उसके लिए तो लाइफ के अंदर अगर वो पहले जैसी ही कोई नई स्कूल नहीं होकर पुरानी होती तो सेटबैक नहीं रहता, उसकी लाइफ उसी पटरी के ऊपर चल रही होती। सो इस प्रॉब्लम को वो इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि उसने अभी तक एक्सेप्टेंस जो है वो या तो अपने फ्रेंड्स की तरफ से स्वीकार करना सीखा है या टीचर्स की तरफ से सीखा है, उसने इस न्यू नॉर्म के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। जैसा दीपमाला मैम ने कहा था कि वो अपने आप का जो है वो बेस्ट बडी नहीं बन पाया अभी तक, उसको एक्सेप्टेंस, लव दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानना या अपने आप से प्यार करना,
ये जो चीजें हैं वो उसने कहीं ना कहीं नहीं सीखी। दूसरी जो सेटबैक सबसे बड़ी है वो है इनसिक्योरिटी। आप एक चीज देखिए कि एक बच्चा अभी 5th क्लास में है और वो अब 6th में आ गया, तो प्राइमरी से उसका जो ट्रांजिशन है वो अपर प्राइमरी लेवल पे हो गया। 5th में वो एक हायर क्लास थी, ही वॉज द सीनियर इन द स्कूल, एंड नाउ इन 6th क्लास ही इज suddenly he is junior. So you just try to find out all the security has been ripped from him. उससे वो सारी की सारी जो सिक्योरिटी है वो छीन ली गई है। ये इनसिक्योरिटी, ये एक तरीके से उसकी लाइफ के अंदर एक नया सेटबैक बन के आया है, और इसकी वजह से हुआ क्या है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी आ गई है उसके अंदर। ये जो वर्ड है डिपेंडेंट होना या अलग अलग तरीके की डिपेंडेंसी होना, यही अपने आप में बताता है कि वो सेल्फ रिलायंट नहीं हो पा रहा है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी आने की वजह से ही इज सफरिंग फ्रॉम फियर, कि नया स्कूल का डर है, उसमें नए सिलेबस का डर है, नए टीचर का डर है, क्या पता उसके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से या उसके फिजिकल लुक्स की वजह से उसे वहां पे स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ही इज हैविंग फोबिया, ही इज हैविंग एंजाइटी। तो ये सारी के सारे जो साइकोलॉजिकल जो डिपेंडेंसीज है वो उसको एक तरफ लेके जा रहे हैं, वो कहलाएगा हमारा साइकोलॉजिकल टर्म में मोटिवेशनल इंपेयरमेंट। यहां उसको मोटिवेशन की, आउटर मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि उसने सेल्फ रिलायंट होकर के अंदर से सेल्फ मोटिवेशन उसने अभी तक सीखी नहीं, और इसी वजह से वो क्या अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या आएगी स्कूल के सामने, दैट ही विल स्टार्ट थिंकिंग टू लीव द स्कूल। वो ड्रॉप आउट होने के बारे में सोचने लग जाएगा और कहीं ना कहीं उसकी स्कूल की जो एजुकेशन है वही हैम्पर हो जाएगी। तो ये दूसरा एक सेटबैक है। तीसरा जो सबसे बड़ा सेटबैक जो सीनियर क्लासेस में मैंने अपने पर्सनल लेवल के ऊपर देखा है वो है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। जैसे जैसे हायर एजुकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, एजुकेशन का जो खर्चा है वो भी थोड़ा बढ़ने लग जाता है, बिकॉज हम देखते हैं कि आजकल का जो ये प्राइवेटाइजेशन और ये कोचिंग कल्चर, जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, उसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में जो एक सोशियो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड का बच्चा है वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में ये एक सेटबैक है कि मैं अपनी आगे की जो हायर एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन कैसे ले पाऊंगा। लेकिन मैं इसके मामले में एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी ही स्कूल से बिना नाम लिए शेयर करना चाहूंगा, कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हुए। 9th में हमारे एक स्टूडेंट था, उसके फादर की डेथ हो गई, कोविड उसके बाद में आया, 10th और 11th में ही वॉज अनेबल टू पे द फी, और हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी थे कि कोविड में अभी फीस नहीं लेनी है, बट अल्टीमेटली व्हेन ही वाज इन 12th, बाय द टाइम 36,000 फीस उस बच्चे को देनी थी। लेकिन व्हेन ही वाज इन 11th स्टैंडर्ड, उसने अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए उसने देखा कि मुझे इस फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से निकलना है, और उसने 11th और 12th में हार्डवर्क के साथ, अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी CUET की तैयारी की, और आज की तारीख में मैं फिर नाम नहीं लूंगा उस यूनिवर्सिटी का, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से उसको 12 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप मिली है अगले 4 ईयर के लिए। तो हियर यू जस्ट ट्राई टू सी व्हाट हिज सेटबैक वाज इज इन लाइफ। He figured it out. He made and set his goal clear, and he was free from the financial dependency, and today he is an example for other students. So these are some of the setbacks in the life of students right now they are facing, but they can overcome all these things if they are self-reliant. So this is from my side. Thank you, ma'am. बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि जो स्टूडेंट था वो मैम इतना मैच्योर्ड इनफ था कि उसने अपने आसपास की सिचुएशन को समझा और ये जाना अपने ऊपर भरोसा करके कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है इन राइट डायरेक्शन विद राइट गाइडेंस। तो मैम ये तो बात हुई, जैसे सर ने बताया, कुछ आपने एग्जाम्पल्स आप हमारे साथ शेयर किया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, कुड यू प्लीज शेयर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज ऑन self-reliance, ma'am? Yes, but of course that was really a wonderful, inspiring experience he shared. I guess we should, rather than relying on something away from us, this is a really good inspiration for the kids to see the people around in their environment who has really, you know, proved themselves that Right. Rather than taking the setbacks as an obstacle or a barrier to their growth, they have used them as a fuel for their further growth. They have, you know, it was kind of a log they have put in and put it in the fire. So that was really good. But of course, if we'll talk about, Bhavani ji has also mentioned about our Atmanirbhar Bharat Mission campaign, you know, which is running by our Honorable Prime Minister Modi. So
with the name itself, it also says Atmanirbhar Banna, right? And if we look at all the examples, I won't like to quote 3 people, you know, all the famous people, they are self-reliant. It is not possible to reach that ladder of the success unless until you won't be, you know, that much of reliance on yourself. You cannot, you know, a tree really has a very strong roots, and these roots actually here is reliance on oneself. When you have the capability to trust on your own self, your own decisions, right? Of course we seek help, we seek the opinion of the others. So if they seek the examples from their books, like Albert Einstein, he by himself was, you know, considered a slow learner. He grew such a famous, you know, in fact we all are learning his theories in the science, his concepts and ideas into the science. And we look at there is very famous musician Beethoven, right? If we look at his histories, matlab the child who were really challenged, they have really found different ways, right, through which they not only, you know, enhance themselves, but rather they have proved a hope to the others also. In fact, why to go to the people? In fact, I am looking at the lights. If we children try to look around in their room, we will try to look at the lights, right? Power gone, we don't have any light. So why don't you be like the sun? You know, when the sun comes, there is no darkness. So our children, this is what self-reliance is. When you be the suns, when you have that light, you can inspire others. So I don't like to quote many others people into their environment. Of course, there are all the people, their parents, they are also very self-reliant. Right. Yeah. So ma'am, if we talk about the self-reliance, how our students can develop that, ma'am? Yeah, that is very important question. In fact, we are talking so much and children must be really, yes, I want to be like this, but how to do it? First key element, I already have talked about it, be confident of yourself. Unless until you don't have a trust in your own abilities, you don't have an ability to look inwards, you cannot be self-reliant, right? I'm saying, oh my God, as I shared in the initial, you know, minutes also, I have the solution and that is also the right solution, but I don't have the confidence in myself. I might miss the opportunity. I know I am very good into my subjects, but I doubt. कई बार होता है ना, दूसरे का पेपर देखकर हम गलत करा है, उसने मेरा गलत. You don't need to blame others. This is your lack of confidence in your own abilities that you can solve your own problem. This is the first key element. Second is you should have the ability to look inward. Even not only your strength, it is very good to praise myself. Oh my God, I am very good into maths, I am very good into English, I am very good into literature, but oh, I cannot lag into something. This subject is very boring. Social sciences तो बहुत boring है. History पढ़ने में मजा नहीं आता है, right? When it comes about the weakness, I started blaming the things. You know, subject में कमी है, मुझ में कमी नहीं है. Of course आप में कमी नहीं है, but एक चीज है जो आपको करनी है, तो you really have to look at the weaknesses also. You must have that sense of strength, where you can really objectively look at yourself. Then only you can find the right track and the right solutions to your problem. Otherwise, you will be like an ostrich who is, you know, looking upward when things are fine, but when the danger comes, you are not able even have the strength to look there, and you might lose it. Third is, as I shared earlier, also embrace yourself. You are unique, you are very, very good. So and uniqueness doesn't mean I don't have the, you know, weaknesses. It just means I like myself the way I am. Unless until you don't have that approval of yourself, you can't be a self-reliant person. So you really have to have these elements. Then when problem comes, how to do it? When the problem comes, first try to, rather than running away from the problem or seeking help, first sit down, be calm. It is very important to be calm and peaceful at certain time when actually the problem is, you have the solution. And so rather than seeking and running away from the problem, confront your problem and then look at it from your small, you know, small things. Like even if today I don't know how to, you know, do my homework, and I start running to the, as Bhavani ji has shared, to the tutors, to the principal. I had the book which I never tried to open and explore and find out the solution, right? So I cannot never be self-reliant person. So it is okay, it is taking the longer time, but shorter route sometimes creates some damages also.
So it is very important that we do this. Yeah, I really wish Navani ji has something to add. Yes, sir. Please. So, what Yeah, would you like to add in it? Yeah, as a teacher, I would like to suggest parents that how they can develop self-reliance in their kids. There are 4 or 5 points. The first thing is that the student should learn accountability. And if he has to develop this accountability, parents and teachers should have to give them age-appropriate tasks. So in our residential setup, that is why we keep on giving the task to students on rotational basis. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में सुबह मॉर्निंग पीटी की अटेंडेंस लेनी है, या स्वीपिंग ड्यूटी है, या क्लास मॉनिटर बनाना है, असेंबली इंचार्ज बनाना है, तो हम किसी एक ही बच्चे को वो काम नहीं देते, क्योंकि उससे उसके अंदर वो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो डेवलप होगी, लेकिन बाकी बच्चों में ओवर डिपेंडेंसी उस स्टूडेंट के प्रति हो जाएगी. सो वी विल हैव टू मेक ईच एंड एवरी चाइल्ड अकाउंटेबल बाय असाइनिंग हिम एज अप्रोप्रिएट टास्क. दिस इज द फर्स्ट थिंग, और पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए. सेकंड थिंग इज teach them decision making. So because self reliant होने का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी या गुण हम कहें तो वो है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग. अगर हमारे अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग है तभी हम कोई डिसीजन ले पाएंगे. तो डिसीजन लेने के लिए केवल बच्चे को ये बताना है दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमोरल, व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इररैशनल. जब बचपन से उसे ये पता लग जाएगा तो डिसीजन जो उसका होगा वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा. वो डिसीजन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, तो उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी उसके डिसीजन को फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम पियर्स, फ्रॉम टीचर्स. सो अल्टीमेटली वो उस डायरेक्शन में जाएगा. तीसरी जो चीज है वो है कि हम देखो बच्चों को कभी उनके चॉइस के लिए भी कभी उनको फ्रीडम नहीं देते हैं. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कपड़ा पहनना है, कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, इवन सब्जेक्ट सिलेक्शन कौन सा करना है. So that is to say, teach them responsibility. तो ये जो कुछ चीजें हैं, I would especially like to mention NCF and NEP 2020, and it is clearly mentioned that if we want our kids to be next generation 21st century learners and citizens, तो हमें 2 चीजें सिखानी पड़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और उसके साथ डिसीजन मेकिंग. और प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी आएगी जब उनके अंदर ये एबिलिटी होगी कि क्या सही है क्या गलत है, और उसका सॉल्यूशन वो कहीं बाहर से नहीं अपने अंदर से ढूंढेंगे. और इसके अलावा कुछ एक स्केल भी है, वो बच्चा अपने लेवल पे पता लगा सकता है इस स्केल के द्वारा कि मतलब वो कितना सेल्फ रिलायंट है. मैं अधिक समय नहीं लूंगा, केवल फॉर एग्जांपल आई एम समवन यू कैन रिलाई ऑन, आई कैन सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स बाय माई सेल्फ, इफ आई हैव अ प्रॉब्लम आई कैन यूजुअली वर्क इट आउट, अदर्स आस्क मी टू हेल्प देम, आई एम डिपेंडेबल. वो कितने नंबर इसको 1 से 5 की स्केल पे दे रहा है, उससे उसको एक आइडिया लग जाएगा वेदर ही इज अ सेल्फ रिलायंट चाइल्ड और नॉट. राइट सर, ये स्केलिंग आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करेंगे. हमारे पास तकरीबन 3 मिनट का समय और है हमारे इस सेशन में. यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स जो आप हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें जो NCERT टेक्स्ट बुक्स में है कि सेटबैक से कैसे कोप करें और कैसे सेल्फ रिलायंस को डेवलप करें. यस, एब्सोल्युटली मैम. This is the, I personally feel as a language teacher is the most important part, because NCERT textbooks are what you can say the guiding principles and full of examples. Lessons are designed in manner. The only thing is that the teacher and the parent should have a keen eye to find out the ideas from lessons. So देखिए 6th क्लास का जो पहला इंग्लिश का लेसन है Who did Patrick's homework, इसके अंदर सीधा सीधा जो मैसेज आता है वो आता है सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. उसके अंदर एक बच्चा होमवर्क करने में प्रॉब्लम है उसको, और वो एक एल्फ की मदद लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एल्फ कोई और नहीं है, वो खुद ही है, और लास्ट में उसे पता लगता है उसी के हार्डवर्क की वजह से वो क्लास के अंदर टॉप करता है. तो क्लास इसी में 6th में एक लेसन है हु एम आई. ये बताता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड हाउ यू विल हैव टू चूज योर पाथ एंड सेट योर गोल. क्लास 9th के अंदर एक लेसन है माई चाइल्डहुड. उसमें फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस का एक एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम की लाइफ से दिया हुआ है कि एक वेल टू डू फैमिली के होते हुए भी वो बचपन में इमली के बीज इकट्ठे करके बेचा करते थे, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर बॉय का भी काम किया. इसलिए नहीं कि उन्हें पैसे चाहिए थे, लेकिन उन्होंने वो लेसन सेल्फ रिलायंस किसके अंदर, फाइनेंस के अंदर. इसी तरीके से इंडिगो, ये मेरा लास्ट एग्जांपल है कि इंडिगो लेसन 12th में है जो गांधी जी का है, जिसमें ये बताया गया है कि गांधी जी ने किस तरह चंपारण के लोगों को ये समझाया दैट मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट. और उसी के ऊपर शायद हम लोग आगे बढ़ते हुए आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और कोवैक्सिन और ये सब हमने देखा है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स
जो है हमने अपने लाइफ में देखे हैं. So I hope it would suffice. Otherwise there are so many other examples. Thank you from my side. थैंक यू सो वेरी मच सर. और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की. मैम, जाते जाते क्या कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे सभी स्टूडेंट्स को? We have learned so much about self-reliance. So they really have lots of things to do in, lots of improvement into themselves. Don't jump. It's a process. So don't hurry on yourself. Don't, overstress yourself, or don't be harsh on yourself. कि 4 दिन में आप ये ले लेंगे. बिल्कुल. It's okay. It takes time. It is not कि today I am not doing it. I am not a self-reliant person. The scale is not saying that. Today I am not this. You can definitely learn this. We can all develop these kind of the qualities into ourselves, right? But it takes time. So please embrace the process. Embrace yourself. Then you can be a self-reliant person. I am so sure. Exactly, dear learners and viewers, you are unique, and as just ma'am told us that it's a quality and it takes time. It's a gradual process, dear learners. You have to embrace yourself, and we have to wrap up this session here only because we are running very short of time. तो जाने से पहले हम दीपमाला मैम आपको और भवानी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो वेरी मच एंड फॉर बीइंग विद अस. और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे सभी व्यूवर्स के साथ शेयर की रिगार्डिंग सेल्फ रिलायंस. और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को, जितने भी लोग हमारे साथ रहे, उन्हें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला. और बिफोर आई रैप अप दिस सेशन, लेट मी शेयर वेरी इंपॉर्टेंट information regarding NCERT textbooks. NCERT textbooks for the year 2023-24 are available throughout the country. These textbooks may be purchased directly from the NCERT sales counter located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata and Guwahati. These sales counters will be functional on all the weekdays including registered holidays, Saturdays, Sundays as well from 9:30 AM to 6 PM. You may also place order for the books online from our website, that is ncertbooks.ncert.gov.in, and these books will be delivered at your doorstep with no delivery fees. And if you want a soft copy of all those books in PDF version, you can also download it for free from NCERT, Diksha, ePathshala website and from our mobile app. And if you want to know more about authorized vendor, then you have to visit our website, that is ncert.nic.in. With this information, me Renu Bhatt is taking your leave, but you stay tuned to eVidya channels and NCERT official YouTube channel for more informative programs. Namaskar.